हेलो पीपल, जय श्री बाबा महाकाल। आज हम मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित ग्वारी घाट में हैं। जैसे कि सभी जानते हैं, वर्तमान में ठंड का समय चल रहा है और इस समय साइबेरियन गल पक्षी भीषण ठंड से बचाव के लिए इस स्थान पर प्रवास के लिए आते हैं और अक्टूबर से मार्च लगभग होली तक यहाँ प्रवास करते हैं। वैसे तो आप नर्मदा घाट पर कभी भी आए, यहाँ मन को शांति और सुकून मिलता है, लेकिन इस समय इन पक्षियों की उपस्थिति यहाँ की सुंदरता पर चार चांद लगा देती है। यह समय मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, खासकर दिन का। ठंड में धूप सेकते हुए ठंड के समय धूप सेकते हुए, बोट का आनंद लेते हुए और पक्षियों को दाना खिलाकर आप इस अद्भुत स्थान का आनंद लेने के साथ साथ नर्मदा माँ का दर्शन प्राप्त और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देखिए, ये नर्मदा जी के चारों ग्वारी घाट स्थित नर्मदा। अब आप सभी लोग नर्मदा जी के घाट के दृश्यों का आनंद लीजिए और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री बाबा महाकाल। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pine, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm, the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves,
कौन कौन अरे हम ले लेंगे तुम आ रहा हम क्या